Good morning, dear student. How are you all? You all are fine at home? Okay, student. So, welcome to the maths class. This is your maths teacher, Juhi Singh. Okay. So, dear student, take out your book. Okay, you all have taken. So, today we are going to start tens and ones. Okay, हम लोग आज tens and ones पढ़ेंगे. Now, before starting the topic, I'm going to inform you about the coming Saturday Thursday we are having an interaction class. Okay, हम लोग का एक interaction class होगा Thursday को. For that you have to download the Google मीट ऐप. ओके, जो गूगल मीट ऐप है वो अपने पेरेंट्स को आप बोल दीजिए कि उसको डाउनलोड कर ले. एंड कमिंग थर्सडे को मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूंगी. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर विथ मी. ओके स्टूडेंट. एंड ऑन फ्राइडे यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज ऑल्सो. जो मैं ब्लैक बोर्ड पे कराती हूँ वो आपको कॉपीज में भी करनी है. ओके, और आप वो कॉपीज़ को सबमिट करिए. आप अपनी मैथ्स की कॉपी जो है वो स्कूल ऑफिस में पेरेंट्स को बोल दीजिएगा फ्राइडे को सबमिट कर देने के लिए. सैटरडे को हम लोग आएंगे और आपकी कॉपीज़ चेक कर देंगे. एंड आफ्टर चेकिंग द कॉपी वी विल सेंड यू द मैसेज. ओके, एंड यू कैन कलेक्ट योर कॉपीज. सो ओके, so now come to the topic tens and ones. Now see here on page number 107, page 107. Open your page 107, student. You all have taken? Okay, now see here. In one box 10 dots are drawn and in other 6. So you have to find out tens and ones. Okay, so see how. Now see here, this is the box of 10. ठीक है, ये जो बॉक्स है इसमें 10 है. 1 2 3 4 5. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, ये जो बॉक्स है वो किसकी है? वो 10 की बॉक्स है. ओके स्टूडेंट. एंड हेयर इज 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ 6 है. तो you can see here, you can write this as 1 10 and 1 2 3 4 5 6 6 ones. ओके, 6 ones. जो ones है वो 6 है. ठीक है, और जो 10 है tens, जो 10 है वो 1 है. 1 10, यानी कि ये जो बॉक्स है पूरी 10 की है. ओके, इसमें जो डॉट्स है वो कितनी है? 10 की है. सो 1 बॉक्स है तो इसलिए मैंने 1 10 एंड 6 ones लिखा है. ओके स्टूडेंट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 box are made. Okay, 2 boxes are there. Now here it is written tens and dash ones. It is written. So इस बॉक्स में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8 ones. Okay, so ये जो बॉक्स है आप 20 नहीं बोलोगे. ओके, ये बॉक्स 1 बॉक्स 10 की है तो here you are going to tell 2 tens and 8 ones. Okay, 2 tens and 8 ones. Okay student, so do it in your book. After that complete it in your notebook. See here, 1 2 3 4 4 boxes are there. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so dash tens and dash ones. Okay, so here it is, how much box are there? So 4, the 4 tens. Okay, 4 tens and 3 ones. 4 tens and 3 ones. Okay, now see the next 3 tens. 1 2 3. 1 2 3 4 5. 4 5 6 7 8 9 10. 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So here it is 3 tens and 5 ones. Okay, so do it. Do it, student. Okay, done, student. Now like this only you have to complete this page. Okay, आपको ये page करना है 107 like this only. Okay, now come to the next page, expanded notation. Now expanded notation. (108) page. Okay, page number 108. Fill in the boxes. Okay, fill in the boxes. So see here, 27 is equals to box tens plus box ones. Okay, is equals to box plus box. Okay, so कैन यू सी कि 27 जो है उसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं 2 tens plus 7. Here is 7. 2 10 plus 7 ones. Okay, or 20 plus 7. 2 tens मतलब how much? 20. Okay, 1 10 मतलब how much? 10. Okay,
7 means 20. Okay student, 7 1 means 7. Okay, तो इसको आप लिख सकते हो 20 plus 7, that is 27. Now next is 84. So 84 can be written as 8 tens plus 7 ones box plus box. Okay, so 84 can be written as 8 tens plus 4 1. Okay, and 8 tens can be written as 80 plus 4. Okay student, now 41 is equals to box plus box. Okay, so 41 can be written as 4 tens plus 1 1. Okay, and this can be written as 40 plus 1. It is 41. So do it. Okay, 2 more questions are there. After 41, 62 is there. Okay, so 62 can be written as 6 tens plus 2 ones. And here you can write down 60 plus 2. It is 62. Now 74. So 7 tens plus 4 ones. 7 tens plus 4 ones. So it can be written as 70 plus 4. Okay. So one side I have completed and the next you have to complete by your own. Okay, it is very simple student and I know you all will do. And after completing this, I am giving you the homework. Complete page 109 in your book. Okay, complete page 109 in your book.
Okay, student, done. So complete it up to page number 109. Okay, and after that I will start the new chapter, addition and subtraction. So, and also one more time I'm reminding you कि coming Thursday we will have an interaction classes. Okay, and on Friday you have to submit your copies. Okay, student. So till then, keep learning, keep practicing, and keep connected. Bye.